हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस देख करके बहुत सारी आपको लर्निंग मिल रही होगी और बहुत डिटेल्ड लर्निंग मिल रही होगी। ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए, सीखते रहिए और अपने साइंस सब्जेक्ट सीखने की जर्नी मेरे साथ कंटिन्यू रखिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। आप जुड़े भी रहिए और अपने दोस्तों को और अपने फैमिली में मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, उसका नाम है एडेप्टेशन इन प्लांट्स। आज हम बहुत सारी चीज़ें प्लांट्स के बारे में जानेंगे। वो किस जगह पे रहते हैं, किस किस तरीके के प्लांट्स होते हैं, कौन से प्लांट्स किस रीजन में पाए जाते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी, और हम बहुत कुछ और प्लांट्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो अडेप्टेशन इन प्लांट्स, इससे क्या समझ में आता है? अडेप्ट मतलब कोई भी चीज़ को अपनाना। अडेप्टेशन में अगर हम इस वर्ड को तोड़ते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं अडेप्ट। अडेप्ट करना क्या होता है? किसी भी माहौल में, किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करना। और ऐसा ही सिंस प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग थिंग है और वो भी ग्रो करता है, तो इसीलिए वो अपने लिए उसको अपने ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है। उसको फूड बनाने के लिए सनलाइट चाहिए होता है। तो वो जिस भी जगह पे ग्रो करता है वो उस जगह पे अपना वो रिक्वायरमेंट्स को देखता है, और अगर वो उस जगह पे वो रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं तो प्लांट्स में उनके इससे कुछ कुछ चेंजेस आते हैं जिसके थ्रू वो अपने उस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करके ग्रो करते हैं। एंड सो टुडे द फर्स्ट थिंग, तो इसमें सबसे पहला चीज, सिंस वी ऑल नो that earth has a variety of plants, so wherever we go, even if we go to any region in the north part or in the south part or in the east part or in the west part of India, we will see plants everywhere, and there is a lot of variety that we see in all these particular regions. That is because of the physical environment of that particular region, due to which we find a variety of plants all across India and in the entire earth wherever we go. So similarly, for this there are two main definition that I will explain to you now. The first one is a habitat. So what is a habitat? Habitat is a natural home. It is a natural home for a plant where they grow and find everything to survive. So since plant जो है वो natural environment में रहता है, जो कुदरत ने ये environment जो nature बनाया है वो उसमें रहता है, तो वहाँ पे वो हर वो चीज़ जो उसको resource चाहिए होती है grow करने के लिए, वो उस environment पे grow करता है. So what is a habitat? Habitat is the natural environment where a living organism lives. Yes, and what do they look for? So they look for resources for what? Resources to grow and live. And what resources? So if I ask you what resources, it will be food, then water, then shelter, etc. Yes. Now the next most important thing that we will know now is about adaptation. So we'll know the definition of adaptation. So what is the definition of adaptation? So adaptation refers to the characteristics that the plants develop to survive in that particular natural surrounding. Like suppose बहुत कॉमन मैं एक रीज़न देती हूँ. many people, many families, they work, they do job, they do businesses. At times they have to move from a particular place to another place for many reasons.
तो उसमें क्या होता है, सपोज कीजिए अगर कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन अगर हम हैं, अगर वो हम एक साउथ रीजन को बिलोंग करते हैं और हम अगर नॉर्थ रीजन में आते हैं, तो वी नो जो क्लाइमेट चेंजेस हैं साउथ में या नॉर्थ में वो बहुत डिफरेंट है. साउथ जो है वो कुछ देयर आर फ्यू सिटीज़ वहाँ पे जो बहुत मॉडरेट रहते हैं, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. बट व्हेन इट कम्स टू द नॉर्थ रीजन, नॉर्थ में इट्स आइदर एक्सट्रीम हॉट और इट्स एक्सट्रीम कोल्ड. सो जब हम वहाँ मूव करते हैं, जब ऐसे कोई चेंज हमारी बॉडी में आती है, तो वी ऑल्सो नीड सम टाइम फॉर टू गिव आवर बॉडी टू एडजस्ट टू दैट पर्टिकुलर weather conditions, to the extreme weather conditions. और बॉडी ना वो अपने आप डेवलप करती है. वी डोंट हैव टू डू समथिंग एडिशनल फॉर इट. द बॉडी themselves make it adjust to that environment, to that particular surrounding, to the particular thing. So similarly the plants also do. So what will I write for adaptation here? So adaptation, I will write the characteristics or features that plants develop to survive. Yes, so if suppose we get a question anytime, what is the difference between a habitat and adaptation? Habitat is a natural surrounding where a living organism lives, but adaptation is the characteristic or the features that any living organism develop to survive. Yes, so now there are few things that we learn in detail about the plants. We all know that plants are living organism, but they do not move. So like we humans or animals, even we are living things, living organisms, but we can move from one place to another. So we can find water, food and shelter for ourselves. But plants, they don't move. So they will have, so they find themselves, they will have to adjust to the particular natural environment where they are living, so that they can to grow. So they will find the suitable they will try to adjust to that particular natural surrounding and they survive there. So therefore we'll notice few plants differ from other plants that grow in different region. Yes, now we will again now when we are learning about this habitat, based on these habitats, the plants habitats are basically categorized, are basically divided into two categories. What are those two categories? The first category is the terrestrial plants and the other is the aquatic plants. So today we will learn about what is the difference between the terrestrial plants and the aquatic plants, and then individually we will learn about these in detail. Yes, so let's begin. So in adaptation, so we'll start now. So based on habitat, so based on habitat, plants can be divided into two categories. One is terrestrial plants and the other is the aquatic plants. So now we'll first understand what is terrestrial plants. So terrestrial plants are the plants that grow on land. As the word in itself specifies what that particular plant means. Terrestrial, which means the plant which grows on land. And what is aquatic? Aquatic, the plants that grow in water. So that is the definition, a simple definition about these two different categories of plants. So terrestrial plants are plants that grow
on land. And even in these terrestrial plants, there are various types of plants depending on their location. So it's not that all the plants that grow in land are same, are of equal shape, size. No, based on their location, their size, their characteristics will differ. So now we will understand more about this. So now the plants growing in plains, so the plants growing on land are divided into categories. So first will be plants growing in areas with less rainfall and plants growing in areas with heavy rainfall, and the third will be plants growing in desert. So we will, and then plants growing in swampy areas and plants growing near coast. So there are 5 different categories into which this terrestrial plants are divided. So 5 categories I'll write. The first one is plants growing in areas with less rainfall. Second is plants growing in areas with heavy rainfall. Yes. The third category is plants growing on mountains. Fourth is plants growing in desert. Fifth is plants growing in, so there are 6 categories, I'm sorry, plants growing in swampy areas. Sixth is plants growing near coast. Yes, so there are 6 categories into which these terrestrial plants are divided. Today we will understand about the first category, which is plant that is growing in areas with less rainfall. Yes, so what are the features of the plant that grow in this particular areas? So the plants that grow in the areas which has less rainfall, there the plants can survive in very hot climate. The trees growing in these areas may have many branches. They shed means झड़ जाते हैं. They shed most of their leaves in autumn. और इन ट्रीज को हम एक अलग नाम से जानते हैं और इसे हम कहते हैं डेसिडुअस ट्रीज. इनके एग्जाम्पल क्या क्या रहते हैं? नीम, पीपल, गुलमोहर, बनियान. सो बेसिकली जिन ट्रीज के बहुत थिक ब्रांचेस, बहुत ह्यूज ब्रांचेस रहते हैं, उन्हें हम डेसिडुअस ट्रीज भी कहते हैं. और हमने इन ट्रीज के बारे में थोड़ा सा जाना था जब हमने अपने अपने प्रीवियस चैप्टर में स्टेम का पार्ट किया था, और वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके अलग अलग स्टेम के कैटेगरीज होते हैं, और उनमें एक प्लांट जिनके बहुत थिक एंड ह्यूज ब्रांचेस होते हैं उन्हें हम ट्रंक कहते हैं. So here we learn more that we also call them as deciduous trees. So today we will I will make some points over it. So I'll write here 1 and I'll put a star mark here and I'll put a star mark here. So the first feature for these are they survive in very hot climate. Second is they shed most of their leaves in autumn. And the third one is
trees growing in these areas may have several branches. So there's a word called may, मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ उनमें वो चीज़ होना ही होना है. So the examples, what will be the examples of this? So example will be peepal tree, gulmohar tree, then we have banyan tree, and then we have neem tree. Yes, so today we will end our learning here, my dear students. Do watch, do learn, and enjoy your learning journey with me, Shikha. Thank you for watching my video. Thank you. Jai Shri Shyam.